Hello everyone, welcome back to my channel. Today I have a very special guest with me, Veena Pujar. Namaste. I'm so happy to invite you to my podcast platform, Veena. Thank you so much. I'm also happy to be here. Thanks for sharing the stage with me. Thank you. So, Veena is a narcissistic abuse recovery counselor, and Veena has her foundation which is called Happy Healing, Happy Feeling. Her foundation focuses mainly on mental health awareness, healing from trauma, and helping abused victims of narcissistic personality disorder, and providing tools and techniques for self help and empowerment. Her mission is to address the neglect of mental health and its consequences, offering guidance and tools for individuals to understand and heal from their problems. She also conducts online sessions to provide a convenient and accessible way for individuals to seek support and find peace, especially for those who are shy to meet counselors in person due to societal fears. She also aims to equip her viewers with tools and techniques to identify and resolve their own challenges by promoting self-healing and independent living. In today's podcast, we would be discussing a lot of the issues like, whenever we are seeing all over the internet. So, एक word बहुत common है, which is narcissist. But many people, they are either not having the right knowledge and they may not understand this term. So I would like the audience and to understand this from you, from a specialist. So can you help us understand who is a narcissist and what does it really mean? Narcissist is like literally, if you take the meaning in the Google and the search, it is like they are extensively loving about only themselves, Okay. not about others. Even their loved ones, they'll not be in love with. Okay. But only they are meant to be selfish kind of sadist kind of person. But literally how people will pursue, only the victims will know how these people will be creating the havoc in their life. Okay. And victims will be suffering inside their home, and they will not be able to open up to the other people, other friends and relatives about this, whatever is happening with them, the narcissistic abuse. Okay, okay. So, Veena, then, how do we identify a narcissist? Like, for example, if someone is married or if they are in a relationship with someone. So, what are the early signs and, what are the red flags which we will be able to identify that person that, okay, maybe this is a narcissistic behavior? So it's very a good question from you, because it's very much necessary to create the awareness in this world, because many people will be suffering. They don't know, like suffering from decades together, like 10 years, 20 years. They won't even know like they are in that type of relationship, but because they would have kids also, they will suffer. They'll keep on continuing this type of harassment. But aapko you need to know the red flags, how it really happens. How do we really, identify a narcissist? And maybe if you can help us to understand or list down what are the pointers if people are, staying with a narcissist, what can be the, some of the lists? Yeah. So blame shifting, to name some. So blame shifting, they will blame the other person. In fact, they are the perpetrator. Okay. And they'll be blaming the victims. Okay. So they themselves have done some mistakes, but it is found out by the victim. For example, say husband's cheating is found out by the wife somehow. So she will ask the husband like, I know what you are doing. You are having an extramarital affair. Okay. I found out somehow.
then immediately the answer from the narcissist will be like, this is because I did this because of you. Yes. That is what the blame shifting is. Okay, and this is a very common trait, which I have seen. Like, can you help us understanding some other points also? Yeah, so they'll be jealous of the victim, means envious. Okay. And the narcissist will be jealous of the victim. Okay. I mean their own loved ones, because the loved ones, the victim, whoever is undergoing this narcissistic abuse, will be powerful. I mean the strength. He want to reduce the power of the victim, so that he will overtake, because that gives them high. Okay. Narcissist. Okay. Like a addiction. No, the drug addiction. It is like you will belittle the other person, and you will be happy seeing that, like how you are belittling. Okay. So that gives them some sort of sadistic satisfaction. Okay. That is why, like, we should be getting all these red flags. Initially, you will not get in the phase. There'll be many phases in the narcissistic relationship. How they trap the victim, how they devalue the victim, and how they discard the victim. Okay. Okay. So sadistic behavior is one of the red flags. Like, what next? What are the other traits? Entitlement, I can say, means they think themselves, the narcissistic thinks themselves as God himself or herself. So whatever they are doing is great. Okay. The other person, whatever he or she is doing, is not so great. Okay. That's what entitlement. You are entitled to, for example, I'll put a point here, like, I am giving you the food. No, you don't have to, you don't have to ask for the money. There comes the financial abuse. Okay. Yeah. And financial abuse, like, will it also include some other abuse, like maybe emotional abuse, domestic abuse? Yeah, domestic in the sense, like, he or she will be not allowed to go out and seek for any help. Okay. And mental harassment will be going on by not giving money to her, or for her own needs. It is not met. Only throwing the breadcrumbs, like I am giving you the food for survival. You just have to survive. You don't have to flourish and take, like, purchasing something for yourself. Okay. I just wanted to understand, is the emotional abuse more, or domestic abuse is more in a narcissistic victim relationship? Yeah, that is one more important question. So domestic violence in this type of narcissistic abuse is less, because emotional mental torture will be given like a slow poison for you. Okay. You will not come to know you are dying. Okay. And the victim, maybe they will feel that, okay, this is happening in everyone's life. They may feel that, and that is how maybe they are not able to really question them. Yeah. Thoda, I mean, sometimes I add the Hindi. That's okay. I think our Hindi viewers also, agar, so there is one more feedback which I would like to just add over here, कि अगर हमारे हिंदी व्यूअर्स हैं और अगर वो देख रहे हैं, एंड अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे, जो कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज है, उसे हम हिंदी में भी कवर करें, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम डेफिनेटली वी आर कंफर्टेबल इन दैट टू. यस. So maybe we can come up with another version, episode. Another episode जिसमें हम हिंदी में बात करेंगे. That will help the audience to know. Yes, to create. Sure. That's why this podcast is mainly to create the awareness among the people who are abused in the relationship, so that it will be creating some sort of, like, they have to seek the help. Yes. In that case, then they have to definitely reach out to the counselor like me and psychologist like me. Then it will be helpful for them. That is what
not. Okay, and one more thing which I would also like to add over here, जब हम काउंसलर की बात करते हैं या फिर जब हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो जिनके पास ये अवेयरनेस नहीं है, जनरली वो लोग ये सोचते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, या फिर मेंटली हम तो ठीक हैं, एंड साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का ये मतलब है कि something is really going havoc in our brain, It and is stigma what yes, people yes. have it. Yeah, but with this platform and with my podcast with वीना जी, मैं यही एजुकेट भी करना चाहूँगी एंड अवेयरनेस भी लाना चाहूँगी कि अगर आप जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक सही रिलेशनशिप में नहीं हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट कंटेंट इन योर लाइफ, प्लीज सीक आउट हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प. या सो दैट इज द थिंग, एंड ऑब्वियसली डिटेल्स जो है वो हम डेफिनेटली शेयर करेंगे. सो As it's always okay to ask for help, yes, because help is always available. yes, Just and I want to add here, like the narcissistic abuse will be so extensively, the threshold it will reach, the abuse. yes, The victim will be will even think of a suicidal thoughts will Yeah. come to him or her. Hmm. So it will be both the genders. It is not like only female will do or the male will do the narcissistic abuse. Both Male and even female. Male and female. Even it is like your parents might be narcissistic. Your siblings might be narcissistic. Yes. Your friends might be narcissistic. या एंड बहुत सारी रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं बहुत सारे सर्कल्स में आना जाना होता है, सो आई एम अवेयर ऑफ इट वेरी वेल कि बहुत सारे फ्रेंड्स जो होते हैं, हम उठते बैठते हैं, वी विल शेयर आवर लाइफ एंड वी विल स्पेंड गुड टाइम्स, बट इट्स ऑल्सो गुड टू रिफ्लेक्ट एंड ऑन द फ्रेंडशिप्स ऑल्सो, आई थिंक. You just have to थोड़ा बहुत आप देख लो, I mean how they are behaving. At least ये तो रेड फ्लैग्स हमने थोड़ा बहुत देख लिए हैं, बहुत सारे हैं ऐसे. जैसे कि मैम और क्या क्या है, जैसे कि बहुत ट्रेट्स है, लाइक कि हमने अभी तक आई थिंक बात किया है ब्लेम शिफ्टिंग, आई थिंक ब्लेम शिफ्टिंग हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, एंड एनवियस मतलब जेलसी हो गई दूसरे पर्सन के तरफ से. सो व्हाट आर द अदर ट्रेट्स maybe which we can discuss? Yeah, there will be like gaslight. You would have heard about gaslighting. The had English movie had also come on this. Okay, know. okay. Yeah, gaslight. If you search in the internet, you will get. Okay, then the term itself is gaslight. Okay, okay. And what does it mean? क्योंकि gaslighting बहुत ही Instagram and के दुनिया में every other reel, they are talking about, okay, my partner is gaslighting me. But then what does it really mean? I would like to know that. It means like the person, the narcissist will try to prove the victim is insane. Okay. Okay. I mean, the victim के अंदर वो ये डाल देगा कि आप दिमाग से अच्छी नहीं हो. Means थोड़े like you will completely like you yourself as a victim, you will start to think as like मैंने कुछ गलत कर दिया क्या. You will start questioning yourself. That is implanted by the narcissist on you. Okay. ऐसे अपने आप को आप दोषी ठहराओगे, है ना. तो ऐसा होता है in the gaslighting means. Okay. Okay. You will start to judge yourself, like belittle yourself, like auto set हो गया, है ना. ऐसा करने की कोशिश किया जाता है, ऐसे करते भी है. Okay. This is one more trait. Okay. Okay. And the victim will be like after the gaslighting, victim will be walking on the eggshells. There is a terminology which is very rare. Medical terminologies are there. Like if you then the victims will come to know like how he or she will be walking on the eggshells means like आप कुछ करो तो भी like you will be doubting it. Like for example, you will lock your door. And then the victim will lock. उसको कहीं जाना है. He or she will lock the door. But he will try to 4 or 5 times he will just try to know whether it is locked or not.
he will check. Okay. That is what it is, instilling a doubt in yourself, like And you are not confident. And maybe walking on eggshells, does it mean कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम बहुत कदम को बहुत फूक फूक के रख रहे हैं? Does that ऐसे लस्सी को फूक फूक के पीना, मीन लस्सी को आप फूक के जरूरत है क्या? नहीं है ना, ये तो ठंडा ही है. तो बट यू विल फील लाइक इट, द विक्टिम विल फील मेड टू फील. Okay. We should not like made to feel like that. Victim is made to feel. मतलब your in self is like confidence lose कर जाए. अच्छा. Okay. So ma'am, apart from walking on eggshells and with the other things which we have discussed, are there any more traits maybe which we can identify? Yeah, the narcissist will isolate you, the victim, from everybody. Okay. Like उनके फ्रेंड्स हो गए, आइसोलेट कर देगा, एलिनेशन कहते हैं उनको. लाइक अपने बच्चों को लाइक अदर पेरेंट्स से आइसोलेशन कर देगा. मीन्स जस्ट टू प्रूव दैट अदर पेरेंट, द नार्सिसिस्ट इज वेरी स्ट्रांग एंड द चिल्ड्रन हैज टू लिसन टू हिम लाइक अथॉरिटी ही बिहेव्स. Okay. Okay. For his own purpose he creates this They try to basically they are trying to cut them off from the family and friends, ताकि इंटरेक्शन भी जब होता है तो ये सारी चीजें डिस्क्लोज ना की जाए. Yeah, and also victim will be belittled in this way. He will not even approach for any other people for help. Okay. No, इसका भांडा फूट जाएगा ना नार्सिसिस्ट का. अगर वो विक्टिम अप्रोच करे हेल्प के लिए, किसी फ्रेंड को बता दे जाके कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, रिलेटिव को बता दे, तो मैं तो पहले ही आप उसको उसके अदर पीपल के सिर में आप बीज बो दो कि पॉइजन का. तो आप अगर विक्टिम आ भी जाए आपके पास, आप ना माने ना. आप ऑलरेडी द नार्सिसिस्ट हैड ऑलरेडी स्पॉइल्ड द मैनिपुलेशन कर दिया है द रिलेटिव्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ. Okay. है ना. Okay. तो when the victim goes to the friends or the other people, then the other person or the friend will not believe the victim. Okay. Got it. Because already it's been manipulated by the narcissist. Okay. Okay. So मैम, जैसे कि हमने बहुत सारी अभी तक आइडेंटिफिकेशन की हैं, एक चीज़ जो मुझे क्लिक हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो अभी तक देख रहे हैं एंड हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ ट्रेट्स आइडेंटिफाई किया है, बट यू नो ऐसा कुछ आप मैच दे सकती हैं या फिर कुछ स्कोर हम जनरेट कर सकते हैं जिससे कि हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ जस्ट ये 1-2 पॉइंट्स मैच हो जाए जो हमने डिस्कस किया है, एंड मे बी यू नो दे विल फॉल्सली अज्यूम दैट माई पार्टनर इज नार्सिसिस्ट, विच इज नॉट गुड. सो इज देयर अ स्कोरिंग सिस्टम और एनीथिंग जिसमें हम हेल्प कर सकते हैं लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए? ये सब रिसर्च बेस्ड डेटा ही है. ओके. मतलब लाइक यू कैन टेक ए स्कोर ऑफ, फॉर एग्जांपल 1 to 10 आप स्कोर रख लो. अगर ये मैंने 10 शायद मैंने 10 बता दिया है ये ट्रेड्स वगैरह, तो आप एक ही करके 1 to 3 पॉइंट्स, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए 10 पॉइंट्स देते जाइए, तो 100 पॉइंट्स होगा. राइट. अगर आपके साथ ये सब के सभी ट्रेड्स आपके साथ हो रहे हैं तो 80 या 90 आ जाएगा तो स्कोर. तो आप इमीडिएटली यू नीड टू मीट द काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट फॉर हेल्प. ओके. दैट इज मोर रेड फ्लैग्स फॉर यू. अगर आपके साथ 50 वगैरह लाइक 40 आ रहा है तो भी आपको जाना है, जस्ट फॉर क्लैरिटी. ओके. या जस्ट टू स्टार्ट द इनिशिएशन, अंडरस्टैंड कि ये मैं इस पोजीशन में हूँ एंड इज दिस समथिंग व्हिच इज नॉर्मल. या वेदर आई नीड टू टेक सम steps in coming out of the relationship or to be in the relationship. आपको रिलेशनशिप में रह के भी आपको हेल्प मिल सकता है. अगर आप काउंसलर के पास जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो थोड़ा आपको मिल सकता है ना. राइट. जरिया मिल सकता है कि उधर से ना डूबने का, बाहर आने का. एंड अगर किसी का स्कोर में भी जैसे कि 20 आ रहा है या फिर 30 आ रहा है, कुछ 2-3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, सो या फिर 4, आई थिंक आपने बोला कि 50 onwards they need to meet. Okay. Otherwise 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, but you can connect with your partner. It is not always necessary to be a narcissistic trait. Like सभी का कुछ ना कुछ
है ही ना, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, सो वी ऑल हैव फ्लॉज. यस यस, सो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है. हाँ, सो परफेक्ट नहीं है तो आपको बैठ के बात करो ना. अगर लगता है कि यू कैन, आप बचा सकते हो अपने रिलेशन को, Yes, yes. तो बात करना चाहिए बैठ के आपस में. सो 20 जैसे कि आपने बताया 50 के नीचे तक दे नीड टू टॉक विद द पार्टनर. ओके, 50 के नीचे तक कॉन्वर्सेशन एंड दे हैव टू टॉक विद द पार्टनर, एंड 50 या 50 के ऊपर जा रहा है तो दे नीड टू सीक प्रोफेशनल. डेफिनेटली दे हैव टू, मस्ट एंड शुड. ओके, ये जो टर्म है OCD, व्हिच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सो आई थिंक कि बहुत लोगों को हो सकता है अवेयरनेस हो, बट यू नो फॉर द पीपल हु आर नॉट अवेयर ऑफ इट, कैन वी शेड सम लाइट ऑन दिस एज वेल? Yeah, OCD is also interconnected with personality disorder like this. A narcissistic personality disorder is also a disorder. Okay. So OCD is also comes under this only, because the other person, see, the person who is OCD patient, he is more towards, like for example, shall I take a example of cleaning? Okay, you are more no tend to do cleaning all the time. Yes. No, Yes. आप बार बार वो सिंक क्लीन करोगे, बार बार टेबल साफ करोगे, एवरीथिंग यू वांट इट टू बी नीट एंड क्लीन. बट द मेड, you have a maid, she will do her work, but if you tell her बार बार like 10 times you will ask her to सफाई करो ये सोफा का, ये टेबल का, that is mainly OCD with you. Yes, with that person, with that particular person. The matlab, the other person, if you are taking some help of your helper or maid, that person will not be knowing that you are so much bounded by this cleanliness, and the other person will get irritated, and they will not be able to work with you for more time. Then the other person will leave. I mean, the maid, the help will leave you, like, will not be interested in. So it is not good for the OCD patient to continue this, and take some help from the counselor by seeking mental health is always good. It is not like stigma हो गया आजकल, like if you go to the counselor or to the mental health professional or psychologist, psychiatrist तो छोड़ ही दो आप, क्योंकि psychiatrist is a one person like who can give you the tablets, but we as a psychologist and counselors, we will talk therapy, we will talk with the person, and we are not bound to give any tablets as such. So यहाँ पे एक और चीज मैं, जैसे कि मैम ने बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए जानना भी, कि साइकेट्रिस्ट, व्हेन वी आर सीकिंग अ साइकेट्रिस्ट एंड व्हेन वी आर गोइंग टू अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट, देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस. कि साइकेट्रिस्ट में give you medicines, they may put you into medications for extreme, maybe someone is going through a depression, extreme depression. So डिप्रेशन के लिए भी हम लोग आ सकते हैं, हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब वी विल हैंडल थ्रू टॉक थेरेपी. बट लाइक फॉर एग्जांपल सिजोफ्रेनिया हो गया एंड ऑटिज्म हो गया, बहुत सारा मेंटल डिसऑर्डर्स है, देन वो लोग डेफिनेटली दे हैव टू अप्रोच द साइकियाट्रिस्ट. यस. एंड जो काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट के पास हम जाते हैं, या फिर जब हम हेल्प को सीख करते हैं, सो इट्स ऑन अ टॉकिंग टर्म्स, जैसे कि बैठ के, एंड देन दैट्स हाउ काउंसलिंग इज डन. बैठ के सुलझा सकते हैं, बात करके. पर ये गुत्तियां सुलझाना साइकियाट्रिस्ट के हाथ में उतना नहीं होता, क्योंकि वी विल सेंड द अदर पेशेंट्स हूएवर कम टू अस टू द साइकियाट्रिस्ट इफ वी नीड टू सेंड देम. अदरवाइज ये अगर इधर इस लेवल में आपको हील हो सकता है, सुलझ सकता है, तो why not? Yes. And मैम, जैसे कि डेफिनेटली आप ये आइडेंटिफाई भी करती होंगी कि ये केस नीड्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड देन मेडिकेशन, सो आप डेफिनेटली उन लोगों को फिर रिडायरेक्ट करती होंगी. Yeah, that's what I will redirect the patients to the psychiatrist, and for more help, then they definitely has to take care on that. Yes. Okay. So मैम, अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, कि लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो इस पर्सनालिटी के साथ रह रहे हैं, बट नाउ कम्स द
वेरी क्रिटिकल थिंग कि ये सारी चीज़ों का सल्यूशन हम कैसे निकालें. यू नो, जो लोग सुन रहे हैं वो अभी तक अगर कुछ लोगों से क्लिक हो गया होगा कि ओके माय गॉड दीज थिंग्स आर देयर विथ मी एंड नाउ हाउ डू आई डील विथ इट. सो इसकी कैसे मतलब हाउ डू यू डील विथ द सल्यूशन एंड यू नो इसके क्या टूल्स एंड स्ट्रेटेजी है जो कि अगर आप कुछ हमें बता सकती हैं तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा. Yeah, that's more important to seek for help. जब अवेयरनेस क्रिएट हो गया, जब आपको मालूम पड़ गया कि मैं इस दौर से गुजर रही हूँ, इट इज कनेक्टिंग विथ यू, कनेक्ट द डॉट्स wherever it is, like मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा, okay, maybe repeatedly it will happen. These are the patterns you need to know. आप patterns देख के dots connect करके like you can know by yourself, or you need our help as a counselor. You can always approach to me. Okay, my foundation is Happy Healing and Happy Feeling. Yeah. So and how does this you know like what motivated you कि आपने ये नाम अपने फाउंडेशन को दिया है, Happy Healing Happy Feeling? yeah, Yes. this is a long story into short. Yeah. Being you are not undergone any such type of narcissistic abuse, you will not be literally help empathetically other Yes. person. Yes. Yes. That's what it's a life lesson for me also, because I had undergone so much of abuse from the childhood to till my second baby. Okay. So I wanted to help the other people. Okay. Like many Yes. millions of people are there seeking. They don't know, like they don't know the like this kind of the abuse they are going through. So I wanted to help the other people who are undergoing such type of trauma and abuse in their life. That's why I have kept my foundation name as Happy Healing and Happy Feeling. Yeah, once you have actually healed in a very very productive way, then that's how you will come into the happy feelings part. That's why survival to thriving. Yes. That is what means. Okay. Okay. ओके. सो मैम आप हेल्प कर सकती हैं हमें समझने के लिए कि आपके फाउंडेशन एंड आपके काउंसलिंग में अगर कुछ लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होंगे जो कि आप उनको प्रोवाइड करेंगी? So they can viewers can approach me through my website. There is a chat bot is also there. I had given my number also, WhatsApp number. They can message me and they will get all the details through my team. They will get a call and for the proceedings they will explain you. Then we will go on with that. Online sessions hoga. Offline sessions nahi hoga. Because only online sessions. We will be using our tools and techniques for the victims to help them, like how they have to come out of the trauma and abuse or relationship. If they want to come out of the relationship, then there are tools. If they want to stay in the relationship, continue with the narcissist, how they have to protect themselves. Otherwise, if you won't put the boundaries, then it is harmful for you. Okay. For example, I will just say one example, like to make them understand the layman terms. आपका कपड़ा वो रोज थॉर्न होता है, I mean, तो उस पे गिर गया, द प्लांट पे दो थॉर्न है नो, तो वो कपड़ा को आपने लाइक धीरे से, बिल्कुल धीरे से निकालना है, सो दैट इट विल नॉट, फाड़ना नहीं चाहिए ना, अदरवाइज इट विल टॉर्न. सो जैसा है लाइक धीरे धीरे से हम लोगों को विक्टिम को उधर से बाहर निकालना है. सो इट विल टेक अ लॉन्ग टर्म, okay, for some people, because they will be abused for years together. Yes. And by the time they have realized and by the time they have sought professional help, बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है. सो डैमेज होने के बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है. तो जब आपको रेड फ्लैग्स पता चलने लगे तभी आपको थोड़ा स्टेप्स लेना चाहिए. क्योंकि नहीं तो लाइक मैरिज होने के बाद, बच्चे होने के बाद आपको बहुत सारा गुजर चुका होता है. यू विल बी नो हैविंग नो एनर्जी to seek out for help. That is what the narcissist want. No, they want you to be stuck in the relationship, doing the household chores, not having any financial independence. So they want that, and you are doing and serving. They just want the feed from you, supply, like as if the light wants to supply. So जैसे कि boundaries create करना होता है, and so मैम और कुछ
tools and strategies जो आप हमें बता सकती हैं, you know, which you will be helping the victims as maybe I would term it. या मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स जो आए हैं उनको बहुत सारे ऐसे मैंने ये सॉल्यूशन भी बताया नहीं कि ग्रे रॉक होना है, पैटर्न्स तोड़ना है. Yeah. मतलब the patterns of narcissist will be the same. Okay. The victims has to change. Yeah. Maybe victims also have to change their pattern of accepting it. No, मतलब you know that they are narcissists. You can't change the narcissist. Yeah. But what you can do is you can change your way of seeing it and your way of safeguarding yourself. Yes. By putting boundaries हो गया. And there is one more technique like grey rock. मतलब कैसा होता है grey rock? I mean, At this I'm hearing it for the first time. Grey rock. Yeah, there is one more. That is the tool which we suggest the victims. क्योंकि no grey rock होने से like कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर मैं इसको बीट करती रहूं, दिस इज लाइक यू फील लाइक अ विक्टिम. मैं बीट कर उसको फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, राइट? दैट इज हाउ द विक्टिम शुड बिकम. इट इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स इजियर सेड देन डन. Okay. हाउ इट इज लाइक वी विल हेल्प यू इन लाइक हाउ. Okay. एंड मैम जैसे कि कुछ विक्टिम्स होते हैं, देयर एज यू सेड कि मैरिड भी होते हैं, उनके किड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली द एंटायर फैमिली इज गेटिंग अफेक्टेड. सो इस केस पे जहाँ किड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे आप कैसे हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को? It's very delicate thing to say because kids will be very much negatively affected. Seeing the parents are fighting with each other because वो नॉर्म समझ लेंगे इसको ना. इट्स अ नॉर्मल थिंग. इज इट अ नॉर्मल थिंग? नो, it's abnormal, right? Yeah. But what the kid mind will be thinking because it is growing. Yes, right. Are you feeding that negativity? That is what we have to safeguard the kid also. Yeah, right. They are being manipulated in the relationship and they will also आगे जाके वो भी समझ लेंगे ना कि ये नॉर्मल है ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा डिसरेस्पेक्ट मैं मदर के लिए कर सकता हूँ या फादर के लिए कर सकता हूँ. एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये भी है, जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, अगर उनके पेरेंट्स ने राइट टाइम में प्रोफेशनल हेल्प नहीं लिया है एंड द किड्स हैव ग्रोन अप, दे हैव बिकम एडल्ट्स एंड उनकी शादी हो गई है, सो I think there is almost 100% chance I would say कि जो kid की शादी हो चुकी है, that kid when they are getting married, they are going to portray 100% of the same characteristics to the partner who has come in. Correct. Yeah, धागा साड़ी सेम साड़ी का है. Yes. है ना? Yeah. आपके बच्चे आपके जैसे. मतलब क्योंकि वो एनवायरनमेंट में, उसी एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, तो डेफिनेटली दे विल ऑब्जर्व. ऑब्जर्व करना पहले आपको पड़ेगा. नहीं तो आप ऑब्जर्व कर जाएगा. राइट. बच्चे स्पॉन्ज के जैसे हैं, आपका सब ले लेंगे. वो देखते रहते हैं क्या करता है मेरे पेरेंट्स, उसी का तो संस्कार है ना. जो हम संस्कार वो डालते हैं वो उसी में ढल जाते हैं ना. राइट. सो मैम जैसे कि अगर आपके पास अभी अगर कुछ क्लिक हो रहा है, कोई केस स्टडी या फिर कोई पर्टिकुलर केस जो कि आपने सॉल्व किया है एंड which will help people to understand के counseling really works, so if you are able to recollect any particular case study which you want to share with our audience. मेरे क्लाइंट्स बहुत सारे आए हुए हैं, इनमें से थोड़ा बहुत मैं बोल सकती हूँ. इनके अपने ही खुद अपने लोग, you will not believe like the parents will be able to harass their own children. I am aware कि ये भी relationship exist करते हैं. Yes. So हमारे इंडिया में पेरेंट्स को भगवान, मतलब अलग लोग भी मानते होंगे, पर ऐसा मैं just for example I am taking because we are their blood, but we tend to we think we see themselves, the parents, as ideal person for us. Yes. हीरो होते हैं ना, लाइक फॉर डैड मीन द गर्ल, द डॉटर के लिए पापा इज हीरो. दैट्स व्हाट इट्स बीइंग लाइक. तो मम्मा के लिए ये लाइक
बेटे के लिए मम्मा इज is the main yes. the caregiver. Yeah. So it already affected in the womb itself. Yes. Because the baby sees in the womb itself. It right. had caught it. And the child as we talk in the energetic world, energy is already gone into that child. Yes. womb में मुझे अभी ये जानना है कि जैसे कि हम सोल्यूशन की बात जब कर रहे हैं तो ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक है विक्टिम, एक है नार्सिसिस्ट। आपके पास ऐसा कोई केस आया है या फिर हम जानना चाहते हैं कि जो नार्सिसिस्ट है, डू दे अप्रोच यू that you know they want to they are able to identify कि yes मैं ही हूँ main culprit and you know I want to fix my life, I need help, so I'm going to seek help from a counselor? No, never it will happen in their lifetime, not you, because it is a myth that they will come. Even the victim will think, okay, if we go for counseling together, sab सुलझ जाएगा, let's go. Yes. Then the narcissist will say that I am not mental, you go, you are mental. Yes. क्योंकि victim जो है वो बहुत बार ये कोशिश करते हैं कि they want to go together as a couple and they want to resolve this. But I don't think that if that is an extreme issue, I don't think that would work. Okay. Even though narcissist will accompany the victim to a mental health professional, the narcissist will manipulate the doctor themselves. Okay. And they will say that this person is so and so and they are the ones who need treatment. Yeah. Okay. ऐसा हो जाएगा. So it is very difficult. We never suggest the victim to go with a narcissist, accompany the narcissist to the mental health professional. Okay. So in this case, narcissist seeking help, that is completely crossed out. So what remains is the victim. So victim has to definitely identify कि ये issues हैं and then they should be the ones to you know come out and seek help. Okay. That's a very good point. And बहुत सारा you need I'm writing a book already. On this. And when is it getting published? In another 2-3 months. It's already on the process. Okay, that's great. Amazon and all, it will get published everywhere. Happy healing, happy feeling. My first book on the same. Okay, sure. I would, recommend the viewers, and once you put it out in your website, and I think people can get in touch or they can follow your content on Instagram. I think you will be publishing when, like, you will be letting the audience know like when it is getting published. In my website is already like cover, book cover, everything has I had put. Okay. It's in the process, so it will soon. Sure. कि जो लोग काउंसलिंग ले रहे हैं एंड क्या ये पॉसिबल है कि एक तरफ वो काउंसलिंग भी चल रही है उनकी और दूसरी तरफ काउंसलिंग लेने के बाद, क्योंकि वो काउंसलिंग में भी हफ्ते में एक बार हो रहा है या 1 घंटे का हो रहा है, एंड देन दे आर गोइंग बैक टू देयर द सेम प्लेस वेयर दे आर स्टेइंग विद दैट पार्टनर और मे बी इन दैट पर्टिकुलर फ्रेंडशिप और मे बी व्हाटएवर रिलेशनशिप इट इज, तो वो लोग साथ में रह भी रहे हैं एंड काउंसलिंग भी चल रही है, तो क्या वो इफेक्टिव होगा या फिर it will not work out as desired? This one is very important question because that gave I forgot to tell you one more thing, that this happens in the workplace too. Yes. You will find a narcissist boss. In that case, what you will do? Yes. You had to be in the same project. You had to work in the same under the same boss. Or maybe some colleagues are also there. Colleagues are also there. Means in the workplace means it had come everything like. So you were working 8 to 9 hours. You will be so much stressed. आपके इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि आपके सर के ऊपर डोसा डाल दे तो डोसा निकल के आए. इतना स्ट्रेस कैसे संभल पाओगे आप? हाँ, तो उस केस में फिर तो कैसे इस चीज को हैंडल करना है? सो यही के लिए आपको काउंसलिंग आना चाहिए ना. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि
क्या ये पॉसिबल है और क्या ये रिकमेंडेड है आपके साइड से कि अगर लोग काउंसलिंग ले रहे हैं एंड देन शुड दे बी गोइंग बैक टू द सेम होम, या फिर आप उनको ये सजेस्ट करती हैं कि दे स्टे समवेयर एल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन देयर हीलिंग इज गोइंग ऑन, एंड देन सो इसमें आप क्या suggested recommended क्या है? I would suggest like if you have any help like around you, like in your environment, आपके माँ बाप है या पेरेंट्स, if you have any parents or friends के यहाँ थोड़ा आपके लिए जगह हो या समय हो, mean they can accommodate you along with them. You can talk to the trusted ones and take some help. Stay separate for some time. Okay. That is what usually we recommend, but in that case they don't have any other people to go for. They don't have money, they don't have workplace, because if they do have money and if maybe if their friends are also not supportive, I'm just taking a situation कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, friends are also not supportive, but maybe if they do have money, so they can stay in a hostel or a PG environment for or something. some time. For some time. It will become more challenging if they have kids. They have to stay with the partner only, because they have also co-dependent हो जाएंगे, तो बहुत इफेक्टिव होता है एंड इम्पैक्ट भी बहुत पड़ता है. पर वी सजेस्ट टू बी, आई मीन एक ही होम में रहते हुए भी द विक्टिम हैज टू अलग थोड़ा सा अपना, दैट इज व्हाट आई टोल्ड लाइक अबाउट ग्रे रॉकिंग, मतलब थोड़ा आपको डिस्टेंस क्रिएट करना या फिर मे बी रूम साइलेंट थोड़ा साइलेंस मेंटेन करो, सो दैट यू विल नॉट बी अटैक्ड सो मच टाइम्स, सो दैट आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ऐसे बिहेव करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इवन दो यू विल, द नार्सिसिस्ट विल नो द बिहेवियर, द पैटर्न्स व्हिच used to impose upon you, like it is and not they getting will be affected. able to see a difference as well, I think. And they will catch it immediately, because always you used to be serving person, now you have taken the power back. Right, now you are trying to keep it with you, the power, and they sense it, right? Obviously. Right, so you have to take some little step by step. That is why it will take years together. The healing also, it is not simply, it is not a linear thing. It will go like wavy kind of thing. It is not linear. ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छी रिकमेंडेशन सजेशन जो मतलब मे बी आप फॉलो करती हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अगर कोई अफोर्ड कर पा रहा है तो डेफिनेटली आई थिंक आप उन्हें वेज बताएंगी, लेकिन जो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक ही घर में मे बी द सजेशन व्हिच यू आर सेइंग, आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना है, बच्चों को बचाना है, साथ में और हीलिंग भी करनी है साथ ही साथ. मीन्स दैट इज व्हाट वी थ्रू आवर फाउंडेशन वी एम्पैथाइज विद द पीपल, बिकॉज अपने पे गुजरती है ना तभी चलेगा, पता कैसे चलेगा. व्हेन वी पुट आवरसेल्फ इनटू देयर शूज एंड हेल्प, दे रियली थ्राइविंग इन नाउ इन देयर लाइफ. ओके, एंड लास्टली मैम, जैसे कि मेरा ये एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे कि अगर मे बी you have healed or that person has healed with an average of 70%, 80% healing हो चुकी है, so क्या ये सही होता है, या फिर आप उन लोगों को काउंसिल करते हैं कि they can either continue with the same relationship, same place, या फिर they can move out of that particular relationship, या फिर कोई वर्क प्लेस है वहाँ पर से जाना है या वहाँ पे ही रहना है, और इस टाइप की रिलेशनशिप अगर रहते हैं लोग तो क्या वो वर्कआउट करता है फिर फ्यूचर में इफ दे हैव हील्ड? 70% 80% हील हो तो ठीक है, पर इट डिपेंड्स अगेन ऑन द इंडिविजुअल पीपल, पर्सन, दे ओन चॉइस एंड डिसीजन, because we can take the horse to the water, the pond. As a counselor, like I will give the suggestions, tools, techniques, but the horse has to
drink the Drink water from the by pond, its yes. own. ये बहुत अच्छी है, ये एग्जांपल आपने बहुत अच्छी दी, I really liked it. Yes. Because you are thirsty. I can take you, like I can give you a glass of water. Yes, yes, but you have to drink it. You have to drink it. Yes. The choice is yours. Yeah. सो मैम जैसे कि मुझे जानना था कि आपके पास जो डेटा है, और ये मेरा खुद भी पर्सनल क्वेश्चन भी है जानने का, कि जब हीलिंग हो चुकी है, सो डज दैट मैरिज थ्राइव अगेन, और क्या ये जो पैटर्न्स होते हैं या जो भी इश्यूज है हीलिंग के बाद, क्या वो मैरिज या वो रिलेशनशिप या जो भी है दैट स्टार्ट्स टू थ्राइव बैक to normal? No. This is a problem with the narcissistic people. Even though victim wants to, I say, but this is not possible with the narcissist themselves, because they have to keep it the distance. Otherwise, they will take the advantage again and again and rupture you like anything, and damage you again. They damage their own children. They don't even bother. Yeah. Okay. So then I think कुछ लोग जो मे बी अपने बच्चों की वजह से शायद फिर ये ऑप्ट करते होंगे कि they want to stay and then they don't really want to come out of it. So but what is the use, you tell me, like the बच्चा देख रहा है and it is going to impact. आपका तो जिंदगी इस तरह गुजरी है, then it thinks as the bacha, the child will think as it is a norm to be like that. So it is going to impact the kid also in his life also. He will attract the same kind of narcissistic people again in his or her life, the child. So in keeping that in your mind, you have to take step for yourself. So आप अपनी healing journey start कर दो. Generational trauma होता है इसके पीछे. That is the reason. So आप then when you heal, your child will also heal. Right. So I think कि जो डिवोर्स जैसा ऑप्शन है या जो है, I think कि वो आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करती होंगी, बट अल्टीमेट डिसीजन गोज टू द क्लाइंट. एंड we will give all the लीगल सजेशंस, लॉ भी है, बट कोर्ट में उनको बहुत डिफिकल्ट है ये प्रूव कर पाना कि ये ऐसा है. देयर इज दिस डिफिकल्ट बिकॉज मैनिपुलेशन हो जाता है सब तरफ से. तो विक्टिम शुड बी वेरी एम्पावर्ड. दैट इज व्हाट वी फ्रॉम आवर फाउंडेशन हैप्पी फीलिंग दैट्स मेंट टू mean for like emotional well-being of the people, empowering emotional well-being of the people. Okay. So we are mainly towards it. Yes. So with this, we have come to the end of our podcast, and I would like to express my heartfelt gratitude and thanks to you ma'am कि हमने इतनी सारी amazing and enlightening topics पे आज discussion किया. And thank you once again. Hope it will help all of you, and please approach for the therapy sessions, counseling session. Not only for, I'm not telling like you have to come to me, but I'm telling with this awareness, go to any of the counselor, whoever is reachable to you. Anyway, the worldwide online counseling is there with us, but you had to, if you want to meet somebody close to you, then go to the counselor and take definitely help from them. That will help you to at least lead your life peacefully. Yeah. That's what my message. I am in the mission of helping many more people who are abused in the relationship like this, narcissistic abuse particularly, because when you had gone through such havoc, nobody will be able to understand you. I really know that because I had been gone through for more than 22 years or 30 years, you can say. So I really empathize with you. So please come to me for help, as it's okay to ask for help. Namaste. Thank you. And one more thing for our audience, if you have any questions related to our podcast, and if you want to put out your comments or your questions, you can feel free to put it in the comment section. Me and ma'am, we both will be reviewing the comments time to time, and obviously we will be reverting back to you. And if you want to get in touch with ma'am, and through her foundation, which is Happy Healing, Happy Feeling, you can definitely what I will be doing from my side is I'll be putting the details, the contact number and everything in the description. QR code. So QR code and
contact details, everything I'll be putting in the description. You can check it from there, and you can approach her. Yeah. So thank you so much once again, ma'am, Thank for you. your valuable Thank time. you. Thank you It for your was an time. amazing session with you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Every night are we paradise seems so far away. Still I try